So friends, this is your introductory session before the interviews of the 70th BPSC. Let me first introduce myself. I am K.K. Sinha, Joint Secretary, retired last December, and I have worked as ADM, SDM, Circle Officer, Block Development Officer, Executive Officer of municipalities. I've also had the opportunities to work with a World Bank project in Bihar government, and I was a very crucial part of the DBT team, the Direct Benefit Transfer team, which developed the direct benefit transfer of the pensions of the state and central government. So dear friends, with introduction, I would like to say that the first thing you have to prepare is your introduction as you enter the room of the interview. How you introduce yourself is very clearly a succinct and formal introduction. संक्षिप्त और औपचारिक. संक्षिप्त इसीलिए कि इंटरव्यू का टाइम लिमिटेड होता है, और फॉर्मल गागर में सागर, अर्थात आप जो भी लिख के पहले दे चुके होते हैं अपने सीवी में, तो सीवी इज ऑलरेडी देयर विद द इंटरव्यू बोर्ड, आपको उनको एक स्मूथ फ्लो ऑफ स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर देना है. सो द इंट्रोडक्शन, एज आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ बिफोर यू, you should also introduce in a similar way, in a succinct and formal way, in one go, detailing all the things that you have already written down in the CV. These are the main topics I'll be covering regarding the introductory program of preparation for the interviews of 70th BPSC. The first is general preparation. जनरल प्रिपरेशन का मतलब है कि आप सामान्य बातें जो इंटरव्यू बोर्ड के पहले आपको अपने बारे में जाननी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए. आप एक प्लेजेंट मूड में रूम एंटर करते हैं. मे आई कम इन सर्स, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? और आप अंदर स्मूथली जाते हैं, अपनी चेयर के पास जाके खड़े हो जाते हैं उनकी साइड में, और आप वेट करते हैं कि वो आपको बैठने बोलें. वो जनरली आपको बैठने शुरू में ही बोलेंगे, और अगर ना बोलें तो आप उन्हें वेट करेंगे बोलने का. यू विल वेट देयर टिल दे आस्क यू टू सिट डाउन, एंड देन यू सिट डाउन कंफर्टेबली विथ हैंड्स ऑन योर लैप, स्माइलिंग, नॉर्मल फेस, और अपनी आंखों का कॉन्टैक्ट, मेक आई कॉन्टैक्ट with all the members one by one and greet them. First the ladies and then the gent members. Chairman, then ladies and the gent members. This is how you meet them with eye contact and greet them. And then you introduce yourself. As I said, the introduction should be succinct and formal. Therefore, you are now ready to face the barrage of questions coming to you. This is a general preparation about the entering the room for interview. Second thing that the general preparation demands is that you should be prepared to answer their questions, and you should prepare in a particular way. And what is that? It is exactly the order of answer is exactly the opposite of what you do in a written exams. In a written paper, when you write an answer, you start with introduction, you go to the detailed points, then you conclude. Here, you have to start with the most important point in the very beginning. सबसे महत्वपूर्ण जो विषय आपके उत्तर का होगा उनके प्रश्नों के बाद, वो आप सबसे पहले बताएंगे, और फिर समय मिलने पर आप डिटेलिंग करेंगे. तो द ऑर्डर इज जस्ट द रिवर्स्ड. दिस इज बिकॉज इंटरव्यू में समय कम होता है, और इट इज वेरी लाइकली दैट योर आंसर्स विल बी कट शॉर्ट, another question will be asked, or you may be tossed to another member
so that they may ask you another question from an entirely different area. So you should be prepared. You should be preparing the answers of the questions in a way that the most important parts come in the very beginning, and then you go into the detail if they allow you. The other thing is the choice of language. Before you enter the room, you write your CV, and you also write the choice of language of your interview. It could be Hindi, it could be English, but whatever it is, you should make it sure that you are very comfortable in it. आप अपनी भाषा पे अगर आराम से अपने वक्तव्य को दे सकते हैं, उसी भाषा को चुनें। और भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपने अगर अपना रिटन एग्ज़ाम इंग्लिश में दिया है तो वो इंग्लिश हो, पर वो नहीं भी हो सकता है। आप रिटन में कुछ और हो और इंटरव्यू में कुछ और भाषा का चयन कर सकते हैं, पर आपको चयन ये समझ के करना चाहिए कि आप उसमें कंफर्टेबल हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात आती है पेस ऑफ डिलीवरी। जो आप बोलते हैं वो पहले आप दिमाग में सोचते हैं, फिर वो शब्दों में होता हुआ आपके बाहर आता है और वो कम्युनिकेट होता है। पेस ऑफ डिलीवरी शुड बी सच दैट देयर इज नो हिकअप इन इट, देयर आर नो स्टॉपेजेस लाइक लेट मी सी, व्हाट आई मीन। ये चीज़ें जो अननेसेसरी लैंग्वेज में हैं, आपकी भाषा में वो नहीं आए तो बेहतर है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। सो अपनी पेस ऑफ डिलीवरी ऐसी रखें कि आपकी आंसर्स, आपका डिलीवरी बहुत स्मूथ हो। थोड़ा स्लो हो सकता है पर इट शुड बी स्मूथ, इट शुड नॉट बी हॉल्टिंग। वो रुक रुक के नहीं होना चाहिए, जर्क्स में नहीं होना चाहिए, तेज बोलें रुक जाएं, ऐसा ना हो, ज़्यादा बढ़िया। इसका अभ्यास कर लें। ये जनरल बातें जो प्रिपरेशन की हैं वो भी अब आपसे मैंने शेयर करी। अगला पॉइंट आता है फैक्चुअल प्रिपरेशन का, नंबर 3। आपने अपने मेन एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारे विषयों पे जनरल स्टडीज़ में तैयारी की होगी, प्रीलिम्स में की होगी, और काफ़ी समय निकल चुका है, आप उसको अपडेट करते रहे होंगे। फैक्ट्स अराउंड 500 to 1000 टॉपिक्स related to current affairs, economy, polity, science, international development, आपका अपना विषय और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप टॉपिक्स चुनें और बुलेट पॉइंट्स में छोटे छोटे 5-7 बुलेट पॉइंट्स के आंसर्स प्रिपेयर करें। जैसा मैंने पहले बताया, आंसर्स में पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे और फिर डिटेलिंग आप करेंगे। This is how you prepare for all the facts that you have gathered over the last year for the preparation of this exam, and a great opportunity that has come in your way by way of interview. So preparation fact का broad based होना चाहिए. The spectrum should be very broad as possible, and there is no limit to it. Anything, they can ask anything, virtually anything on earth it can be asked to you. अब मैं आता हूं चौथे पॉइंट पे, जो है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट इंटरव्यू का सबसे ज़रूरी पहलू है। आपका मेंटल मेकअप, आप पर्सनली प्रेजेंट होते हैं। जब आप आंसर लिखते हैं तो आप पर्सनली प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट जब वो आपको देखते हैं तो आपका टेम्परामेंट ऐसा होना चाहिए जिससे एक पॉजिटिव ऑरा जनरेट हो, और वो टेम्परामेंट क्रिएट करने के लिए आपको इसमें अभ्यास करना पड़ेगा। ये नेचुरली नहीं होता है, इसको लाना पड़ता है, और इसके लिए एक मेंटल मेकअप आप तैयार करें। एक मूल मंत्र मैं आपको देता हूं, उसे कहते हैं आई एम ओके, यू आर ओके। मतलब है कि जो इंटरव्यू बोर्ड है, आप अपने को उससे कमतर कहीं नहीं मापते। You are at par with them as far as knowledge at that level, at that point of time is concerned. You consider yourself, you believe in yourself that you are at par with them. You are polite and respectful to them, but you know that you know as much as they do on the subjects you have prepared.
and you are not in awe of them at all. अर्थात उनके स्टेचर, वो पुराने सीनियर ऑफिसर्स हैं या वर्किंग ऑफिसर हैं या कहीं के प्रोफेसर हैं या नॉलेजेबल व्यक्ति हैं अपने क्षेत्र के, उससे अंतर नहीं पड़ता है। आपने जो कड़ी मेहनत करी है, अभी तैयारियां करी हैं, और आपका नॉलेज जिन विषयों पे आपने तैयार किया है, 500 विषयों पे, 600 विषयों पे आपने तैयारी की है, आंसर्स प्रिपेयर किए हैं, लिखे हैं, पास किया है एग्ज़ाम, तो आज के दिन आप एज को हटा दें तो आप उनके एट पार हैं। ये आपको अपने आप में विश्वास दिलाना होगा, कन्विंस करना होगा। आई एम ओके, यू आर ओके। सो आई एम नॉट इन ऑ ऑफ द बोर्ड एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल फेसिंग देम एंड देयर क्वेश्चंस। सो ये मूल मंत्र हमेशा याद रखें, ये आपके काम की चीज़ है। और जैसा एक और वर्ड, एक और इडियम कहा जाता है, नंदन नीलेकानी बोला करते थे, you should be thick skinned, calm and cool. Their questions may be something you are not able to answer, but that should not ruffle you. You should be calm and composed in every circumstances, whatever may come your way by way of questions. Temperament का अगला पहलू है be true to yourself. एक चीज तो आप जान लें कि सामने के बोर्ड मेंबर्स आपके विषय के हों ना हों, आदमियों को परखना उनकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है। यू कैनॉट ब्लफ देम, सो इट इज बेस्ट सजेस्टेड दैट यू शुड बी ट्रू टू योरसेल्फ। ट्रू टू योरसेल्फ, if you do not know any answer, there is no point beating about the bush. Just accept it and request them for another question. You may not answer that also, ask for another one and stay calm and composed. That is the way. Be true to yourself. ये और भी ज़रूरी हो जाता है जब आप अपनी हॉबी के बारे में बताते हैं या वो आपसे पूछते हैं। यदि आपकी कोई हॉबी है तो आप बताते हैं, अपने डेटा शीट में लिखते हैं। अगर आपने हॉबी लिखी है तो हॉबी की ज़बरदस्त तैयारी होनी चाहिए। अगर वो वाकई आपकी हॉबी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी है तो यू शुड प्रिपेयर वेरी डीपली अबाउट इट एंड गो टू द डेप्थ्स एज मच एज पॉसिबल। सो जैसा मैंने कहा, बी ट्रू टू योरसेल्फ, and especially regarding hobby, you should be very truthful and you should accept what it is. टेम्परामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम का मतलब है क्या सही है, क्या गलत है, आपका नज़रिया किसी के विषय के बारे में, किस विषय के बारे में क्या है, किस चीज़ को आप सही मानते हैं, किसको गलत मानते हैं, किसको प्रोग्रेसिव मानते हैं, किसको रिग्रेसिव मानते हैं। ये चीज़ें आपके वैल्यू सिस्टम से जनरेट होती हैं। और ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस बात का ख्याल करेंगे कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं। आप एक ऑफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन होल्ड करने की मंशा रखते हैं। यू वांट टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, अ फंक्शनिंग ब्यूरोक्रेट। So, your value system should be very sorted, clear होने चाहिए। और वो क्या होने चाहिए? Definitely, जो हमारा डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट है, हमारा डेमोक्रेसी का जो मूल मंत्र है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, उसके प्रीएम्बल में डिफाइंड है और पूरी फिलॉसफी को डिफाइन करता है, वो वैल्यू सिस्टम should be ingrained in you. It should be within you. You should actually come to believe in those values, because if you come to believe in those values, all the questions that they put forth to you will be answered in the true spirit, and that is very important. I would like to discuss some of the important issues regarding value, the value system, and the axis around which these questions might evolve. And I request you to prepare mentally, temperamentally about these issues which are
crucial for creation of a value system framework for any aspirant to become a bureaucrat, either in Bihar or at the national level. The first is the gender issue. You know, the male-female equilibrium, the power structure, social structure, everything, patriarchy, matriarchy, and other terminologies, and whatever that you may have read or heard about it. You should be very sorted about these gender issues. The government is promoting a certain agenda towards empowerment of women. Since the very beginning, since the freedom struggle took place and started in the early 20th century, the major political party, the Congress, had this agenda from the very beginning. So now it defines our national policy as well. So you should be sorted out on the gender issues, because many programs, they may ask about things like government programs or issues that have come up in the national media or state media. You may have to answer that keeping that value in mind. So you should be very clear about the gender issue, and you should be pro-women empowerment. As far as possible, you should ingrain that value in yourself, because if you become a bureaucrat, that should also define your policy implementation. The other is environment versus material progress. Environmental degradation and issues related to many events like COP or the recent policy of the American president, the way he has treated the COP meetings and other environmental steps that superpowers are taking, and India has taken a stand on it. So you should be also sorted out on that. You should have very clear-cut ideas of what defines our national policy as far as environmental concerns and economic development, because as you know, we are a developing economy and we strive really hard to get to the higher growth level of economic development. But economic development should be sustainable, and issues like this, as you know, you must have prepared for it in great detail. So you should also have a very sorted out idea of these issues, the policies related to environment, and which are juxtaposed with developmental economics and policies of Indian and state governments. Another axis is economic growth versus distributive justice. We are a democratic state, but we are a capitalistic economy. Economic growth with concentration of capitalist power in few hands. And we shifted here from the earlier socialist oriented economy of the till the 80s, which we developed according to our directive principles, Article 39B and C, the nationalization of banks and other socialistic policies which we had. We shifted to purely capitalist economy, going towards reaching out to faster growth so that the growth is higher, leading to greater distribution of economic wealth and wealth creation. But you should be very clear in your idea when you prepare on this axis. You must be preparing in detail how you wish to marry economic growth with distributive justice. There is a lot of talk the world over about inequity in society, in the international world, or even in India in general and Bihar in particular, about inequity in distribution. Concentration of wealth in few and fewer hands, and how you wish to tackle it as a government official. So, whenever a question comes up regarding economic growth and distributive justice, you should also be very clear in your preparation. So, prepare on this issue with great detail and going to some depth on these issues. Then there is the axis of meritocracy versus positive discrimination, reservation in jobs, educational institution, and meritocracy.
These are the issues that may be put before you by the board in a very clever manner and going to elicit response from you so that they know what is your view on this. Clearly, your view should be what the government's view is. Meritocracy has to be there, but positive discrimination must be there where it is needed, and it does not hurt the public good. So public interests and public good should be of prime importance whenever you discuss on these issues. Another question which usually comes or may come in different forms before you is welfare measures versus doles. In common language, which they call on these on the news channels like Revadiyan, Batna, public in the name of public good, just distributing doles. Is it right, or is it the right function of the welfare state? Direct benefit transfer, which I discussed in the very beginning of my class, and sending money directly to the accounts, is it the right thing to do? Is it the right policy towards development of economic development of the people and society in general? And does not and all the issues related to it are one of the important points of discussion which you must prepare. Another question which might come around this axis is democratic structure versus autocratic structure. Usually in common discussion, it comes that India is not able to develop as fast as China because the decision-making process is clouded in democratic processes, and there are so many delays and hindrances in taking a decision and implementing it also. So what would you prefer? Here also your value system should be very clear. You need faster development, you need faster decisions, you need faster implementations, but roots of value system should be there in democratic structure. It can never be challenged. It is the basis of our forefathers who made their life sacrifices to get freedom, and this is the structure that we are going to work on with better efficiency. So democracy and autocracy is another value issue which must be sorted out before you prepare, before you go into the interview board. Another question that usually surrounds the issue is around corruption in government in general and in society, in particular in certain areas where crony capitalism, things like control of media spaces by corporate world aligned towards the government, and issues like that may come up. And as the media is called the fourth estate, the control of media or the inclination of media in a certain way, favoring the government and not opposing it, which used to be its traditional role. So questions on these issues will also be put forth to you, and you should be very well prepared by way of value system. What should be your stand on this? So corruption is one big issue, and issues related to it may go up to, say, for example, political will, funding of the elections, funding of the political parties by the budget, the issue of electoral bonds, how much they are effective, do they curb crony capitalism or favoring of corporate houses by the ruling party or the government, and how you are going to tackle it, how you are going to make policies or support in making policies which neutralize political parties in such a way that they are not influenced by big capital, and therefore there will be an issue of funding of elections and also political parties through neutral means, maybe indirectly or directly through budget funds, which
some of the countries in the world like Germany does? And what are its impacts? And how are you going to suggest any reforms in this? There will be another issue related to this is the financial security of the political executive. Corruption can be tackled only if people who are working for the government in a political way, they are elected as legislators, MPs, and then they become ministers and head the governments and handle huge expenditure on the public side. Their personal financial security must be ensured so that they are nudged to become neutral, and as integrity is ingrained in their behavior because of their financial security. So these things come as a part of handling corruption in a democratic setup, and especially in India, where these issues are daily talk of the town, and these questions might also crop up during your interviews. But one thing, while I complete this temperamental preparation for the interview, is that none of your views should be on the extreme side, extreme right or extreme left, because as you know, as I said before, you are going to become a bureaucrat. And a bureaucrat is one who implements policies in an incremental way. He is not a revolutionary. It's very clear that no extreme views should be held within yourself. If you do not hold extreme views, they will not be expressed also. So it's very clear that these points, as far as temperamental preparation is concerned, are crucial for you to prepare yourself well before you face the interview. And if you have these issues sorted out within yourself, then there will be no problem in facing any question or all the questions that come your way. Rest, the facts should also be there. Another point, the next point is number 5, Bihar special. Since you are going to face BPSC, Bihar itself in every way is a big preparation agenda, and how you go about it is very important. So first and foremost, you must have heard during the just recent elections of the state assembly, in which our honorable Home Minister came to Bihar, and one of his speeches, he said a very typically historical thing. He said that the government in Patliputra used to fund 2 great world universities, one in Nalanda and one in Takshila, which happens to be now near Islamabad in Pakistan. 2 universities, the knowledge centers, were being funded by the government, the then Mauryan government of which was centered in Patna, Patliputra. So you know, Bihar has a very special place in Indian historical perspective, and in every way, right from the 6th century BC up to the freedom struggle, and after that, after freedom struggle also, till today, every development in Bihar is very keenly observed and reported about. So when you talk about Bihar special preparation, you should start with a clear historical chronology. Some of you who have been a student of history will find it easier to prepare, but most of you must have prepared for the general studies and gone through the historical developments of Bihar and such. So you start with a clear chronological framework. The 6th century BC, let's start from there. From 6th century BC to the Magadhan Empire, the rise of Magad, then to the Mauryan Empire, then to the after Magadhan Empire, the Mauryan Empire departs, you have the Indo-Greeks, the Shakas, Kushanas, and then you have Gupta period.
the period of Harshvardhana, the visit of Yuan Sang. Then comes the Pala period, then the Turkish rule, Afghan rule, Mughal rule, and then the Britishers, and Patna functioning and the other developments in and around Patna during that period. Then after Britishers, the freedom struggle, the great contribution in the 1857 struggle, and then the final freedom struggle which took us to the threshold of independence, and then after that. So this chronology that I just detailed should be there on your fingertips, and major developments must be prepared very minutely, because you are going to appear before the BPSC, and Bihar, especially with its very, very rich background historically, socially, economically, politically, you should be well aware of these things and very minute details about everything. So with chronological clarity, with time frame in tables, you should prepare in very short bullet points all the developments that I just gave to you. The second point will be regarding Bihar is art and culture. This should be separately prepared, especially in this chronological framework right up to the Patna Kalam of the 18th, 19th century and other developments. Art and culture must also be prepared in a very clear, succinct way, and you should be ready with all the answers regarding this sphere of Bihar, especially the regional variety of art and culture, especially North Bihar, South Bihar, Magad or Western Bihar, and everywhere. Art and culture should be specially prepared as far as Bihar preparation is concerned. Spots of attraction, especially tourist attractions and historical monuments in Patna, Nalanda, Gaya, Rajgir, Sitamarhi and Vaishali. Ashokan inscriptions, the Ashokan pillars, and then you have the latest declaration by Honorable Prime Minister that the Sitamarhi, they are going to build another temple in the memory of Ma Sita, Sita Dham or Janaki Dham. So things like this must be prepared in great detail because they are very recent and they are hot topics. Another question that might come related to Bihar is the women-centric policy, especially of the present government, which is completing its 20 years in Bihar. The women-centric policies which have been the crux or at the center of the policy making in Bihar must also be prepared in great detail. Women-centric policies, the steps of government, especially the prohibition and the outcome of the recent elections, state elections that have taken place and given a landslide victory to the ruling party, has clearly displayed that the policies being followed by the state government have been accepted very well and very pleasantly by the population of Bihar, especially the women folk. You must be remembering the way of voting and the percentages that came out. For the first time, at least 10 to 11% more voters were from the women folk. They participated in this election with great zest, और उनकी पार्टिसिपेशन से ये पता चलता है कि महिलाओं के बीच में इसका कितना, इन पॉलिसीज़ का कितना अच्छा रिसेप्शन रहा है। खास करके इलेक्शन के कुछ दिनों पहले जो जीविका दीदी और अन्य महिलाओं को इंसेंटिव दिया गया फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फॉर क्रिएटिंग जॉब्स, फॉर क्रिएटिंग बिजनेस फॉर देमसेल्व्स, अपनी पैरों पे खड़ा होकर अपने परिवार को आर्थिक स्तर से उठाना, इसके लिए महिलाओं के माध्यम से जो पुश दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट पॉलिसी का, पब्लिक पॉलिसी का एक मेजर स्टेप है। और वो कितना इंट्रिंसिक है, कितना इम्पोर्टेंस है, इस बात का पता आपको चल गया होगा इस बार के इलेक्शन के रिजल्ट से। तो विमेन सेंट्रिक पॉलिसी और प्रोहिबिशन, जिसके बारे में यह भी कहा जाता था कि इससे गवर्नमेंट
एक्सचेकर को बड़ा लॉस है। पॉलिटिकली इट हैज़ बीन फाउंड टू बी ए ग्रेट डिसीजन एंड हाउ इट हैज़ टर्न्ड आउट, इसका असर क्या हुआ है, क्या पॉजिटिविटी आई है, क्राइम रेट घटा है या चीज़ें बेटर हुई हैं, या फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें आपसे निश्चित रूपेण कहीं ना कहीं पूछी ही जाएगी। सो इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी बना लें, डिटेल और छोटे नोट्स भी बना के रखें, उसकी तैयारी लगातार करें। और फिर हमारी ओर से जितने भी मॉक इंटरव्यूज़ होंगे या और स्पेशल क्लासेस किसी बिंदु पे डिटेल में लिए जाएंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर आता है प्रश्न बिहार की आर्थिक स्थिति के बारे में। ये बिहार सेंट्रिक इशू का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है। बिहार इंडस्ट्रियलाइज क्यों नहीं होता है? इतनी सारी कोशिशें हुई, ये सरकार इतनी सफल रही, विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, रोड्स बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर गया, मेट्रो आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? इज गोइंग टू बी अ मेजर इशू फॉर यू टू प्रिपेयर। जस्ट फॉर रेफरेंसिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिहार तो इंडिया का हार्ट है, पर कोई भी देश या कोई भी जगह, जैसे अभी आप जानेंगे मैं अफगानिस्तान की बात करता हूँ, अभी कुछ वीक्स पहले अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे। इंडियन बिजनेस को उन्होंने 5 ईयर का टैक्स ब्रेक दिया है कि वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अफगानिस्तान में आके लगाएं। सो a country like Afghanistan, which is war torn, is trying to industrialize itself. Should we not also do it? Should we not also be trying harder to get more capital, more industries to the ground of Bihar, so that यहाँ से migration ना हो, economic development fast हो, employment के लिए यहाँ पे जगहें मिलें, पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे मजदूर वर्ग के जितने भी लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन इज अनदर इशू। इस पे आपको बहुत ही डिटेल प्रिपरेशन करनी होगी और शायद कुछ क्लासेस हम लोग भी लेंगे जिसमें आपको इनके बारे में डिटेल डेटा के साथ एनालिसिस बताया जाएगा, और ये शायद आपके पास उपलब्ध भी हो, आपने प्रिपेयर किया हो। प्रिपेयर वेरी गुड data sheets on why industrialization is not taking place and what could be done to offset that. Why migration takes place, push migration, pull migration, and how migration can be tackled. Is it only through government jobs, corporate jobs, and self-employment, on what to be done? So, बिहार की ये जो प्रॉब्लम्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में आपको ज़रूरत होगी कि काफ़ी गंभीरता से इसके बारे में तैयारी करें। इकोनॉमिक डेटा, खास करके इकोनॉमिक सर्वे का और बिहार इकोनॉमिक सर्वे का डेटा अच्छी तरह से तैयार कर आप अपने आंसर्स में इम्बेड कर लें, सो दैट कि अगर कोई प्रश्न आता है तो उत्तर आपका ऐसा हो कि उसमें बहुत डेटा हैवी नहीं हो, पर वो क्रूशियल डेटा पॉइंट्स ज़रूर उसमें जाना चाहिए। जीडीपी की ग्रोथ का, डेट के ग्रोथ का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, सर्विसेज का डेटा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जो आपका गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है उसके कारण जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्प्रेड हो रहा है, इक्विटी में डेवलपमेंट हो रहा है, पॉवर्टी नीचे जा रही है, इन चीज़ों के डेटा आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, सो दैट कि आप अपने उत्तर में उन चीज़ों को इंक्लूड कर सकें। अब प्रश्न आता है अगला बिंदु, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव आज के डेट में इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि उससे प्रश्न आना ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु होता है यूनाइटेड नेशन से शुरू करें कि उसकी सार्थकता अब कितनी बची है। खास करके मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यूनिलैटरलिज्म की पॉलिसी, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सामने सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, यूनाइटेड नेशंस, ग्रुपिंग्स लाइक G20, ग्रुपिंग्स लाइक क्वाड, इन चीज़ों का क्या महत्व रह गया है? क्या ये बेकार हो गए हैं?
इस पर आपको बहुत डिटेल प्रिपरेशन एकदम करनी चाहिए और आपने जो भी किया है उसको आप समराइज करके जरूर बनाएं। इस पे काफ़ी सारे पॉइंट्स और क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे और हम भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि वर्ल्ड का ओनली सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने इंडिया पे अभी कुछ महीनों पहले 50% का टैरिफ लगाया, 25 + 25 फॉर रशियन ऑयल परचेज, वो हटने की क्या उम्मीद है या फिर वो नहीं हटेगी तो जो $80 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स में, वो कितना प्रभावित होगा, किस किस क्षेत्र में होगा, जेम्स ज्वेलरी में होगा, कारपेट मेकिंग में होगा, या फिर वो आईटी सेक्टर में भी जाएगा। H1B वीज़ास पे भी क्वेश्चन उठने लगे हैं, इंडियंस वर्किंग फॉर अमेरिकन फर्म्स भी उठने लगे हैं। तो क्या इससे सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में नहीं होगा, खास करके वाइट कॉलर जॉब्स का, और इन चीज़ों में जो बहुत ही लेबर इंटेंसिव है, जैसे कारपेट मेकिंग या जेम्स एंड ज्वेलरी या फिर मेडिसिन एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। $80 बिलियन आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सीवियरली अफेक्टेड। सो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में इन चीज़ों का ध्यान रखें। कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स, खास करके मिस्टर ब्रह्मा चेलानी या सी राजा मोहन, जिनके आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू आदि में आते रहते हैं, उसको डेफिनेटली रखें, डीपली पढ़ें और डिस्कस करें। उनसे इम्पॉर्टेंट कोई अगर बिंदु आप नहीं समझ पाते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जो क्वेश्चन पूछने का ये बना हुआ है इंटरफेस, उस पर जरूर डालें। आपको प्रॉपरली इसके लिए अलग से क्लास लेना हो वो भी किया जाएगा या आपको उत्तर दिए जाएंगे। तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अ ग्रेट वे, इन अ वेरी डीप वे, स्पेशली आफ्टर this visit of the Russian President, Mr. Vladimir Putin, and so many expectations from it, and relation with USA and international community and the tariffs. This international perspective is going to take a very important part of your interview and interview time, and therefore you must prepare very deeply for it. How the job losses are going to be offset, how is India going to face it, how is India going to accelerate its economic development despite the embargo, almost like embargo on Indian goods being exported to United States, and they are also pressurizing other European states to follow suit. Maybe India could be cut off from the whole of Western world as far as exports and business relations are concerned if it goes too far. So this is going to take a very important part of your interview, and you must prepare very deeply for it. And as I said before, BRICS versus Quad. If there is BRICS, will there be no Quad? Now they are being juxtaposed like that. So international preparation should be like that. Then we come to economic status and other economic developments which are coming day in and day out, especially the GDP blues, the growth rate which has come down, especially the manufacturing data, and despite a lot of efforts by the Honorable Finance Minister and Honorable Prime Minister, the economic development matrices are getting hemmed in by so many problems from all sides, especially as I mentioned before with these 50% tariff and other things. एक और प्रश्न उठा है, there is a question about the data reliability of India. How the data regarding economic developments, GDP, inflation, manufacturing, services, exports, foreign exchange, and other things are put forth in public domain. People outside have raised concerns about its veracity, about the basis of its veracity. Are they reliable enough? Questions may also be asked on this. Then there will be a question on stock market.
foreign institutional investors have been withdrawing lakhs and lakhs of crore from Indian market, selling Indian stocks like they are useless, and all those stocks are being bought by DIIs, the domestic institutional investors. And why so? Are they not using public money to buy them just to keep the stock markets afloat? Is that the right policy? These might be very crucial questions to you, and you must be very well prepared to answer these questions. And for that, you should prepare and get in touch with this institute. Another economic development which you must note is the recent note by Honorable Finance Minister of India regarding bank consolidation. You know the bank nationalization history since the 70-69, and then the consolidation of banks, and now there is a need for further consolidation. Why so? Consolidation to make banks big enough so that they are in the world league. They are in the league of themselves as far as world banking institutions are concerned. They are so big that they are capable of funding the Indian corporates investing outside India. भारतीय कॉरपोरेट्स अगर बाहर इन्वेस्ट करना चाहें तो इंडियन बैंक उनको कैसे फाइनेंस कर सकें, इन चीज़ों पर विचार करते हुए बैंकों को एकीकृत कर बैंकों की संख्या घटाने, उनके बैलेंस शीट को बड़ा बनाने, पावरफुल बनाने, एनपीए से मुक्त करने, स्ट्रॉन्ग बनाने पर बहुत गंभीर विचार हो रहा है। और ये कितना इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों पर आपको डिटेल्ड जानकारी होनी चाहिए और इस पे तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। फिर प्रश्न उठेगा जो पिछले 4-5 सालों का डेवलपमेंट है। जैसा मैंने कहा कि मैं एक डीबीटी मॉड्यूल का शुरुआत करने में बहुत इंट्रिंसिकली इंस्ट्रूमेंटल रहा बिहार गवर्नमेंट का। वो चीज़ें पुरानी हो गई, 18-19 से लेके अभी 27-25 आ गया है। तो व्हाट बियॉन्ड जैम एंड यूपीआई? जैम ट्रिलॉजी, जनधन आधार, मोबाइल और यूपीआई, ये हो गया। अभी मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस यूपीआई पे होते हैं। जैम इज वेरी फंक्शनल। यू हैव 1.2 बिलियन फोन्स फंक्शनिंग इन इंडिया। तो क्या बस इज दिस द फाइनल डेस्टिनेशन? क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया? नहीं, ये बस शुरुआती स्टेज है। इसके बाद क्या हो सकता है सो दैट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और डिटेल में फैले, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फैले और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण जो हमारा इनकम लेवल है, पर कैपिटा इनकम लेवल है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की रेंज में आए। अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री के ही रीजन में काफ़ी पीछे हैं और चाइना से तो काफ़ी पीछे हैं, जहां हम एक साथ हुआ करते थे इन द डेकेड ऑफ अर्ली 90s। तो अर्ली 90s से लेके अभी तक चाइना बहुत आगे निकल गया और अब अभी हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी भी नहीं है। अभी हम बिलो 4 ट्रिलियन इकॉनमी है, $4 ट्रिलियन नहीं पहुंचे। सो 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी और फिर तीसरी इकॉनमी वर्ल्ड की बनने के लिए हमें कोशिश कैसे करना है, क्या इसके अलावा क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं? इन चीज़ों के लिए आप ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के नोट्स या आरबीआई के बुलेटिन्स डेफिनेटली पढ़ते रहें और कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स खास करके इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू को ज़रूर फॉलो करें और इम्पॉर्टेंट नोट्स या पेपर कट्स ज़रूर रखें। इन चीज़ों को मोटा मोटी अभी मैंने डिटेल किया नंबर 7 तक, और इन चीज़ों की तैयारी अगर आप कर लेते हैं with a broad range of around say 500 to 700 questions and preparing very small succinct answers in bullet points, 5 to 6 bullet points, so that you are able to discuss around that issue in a very relaxed and detailed fashion, there is no problem for you to cross this Rubicon and become the bureaucrat, passing successfully the interviews. There will be absolutely a cakewalk for you. So apart from this, I would like to discuss, I was told that the job profile of certain services in BPSC need to be discussed.
I come from Bihar Administrative Service, the 40th batch, and I have worked in different positions as I detailed earlier. So what is the job profile of a BAS officer? A BAS officer starts his job with SDM or at the subdivisional level now, and his primary duty will be as a SDM to maintain the law and order and to coordinate as an area officer with police and all other technical field offices, all other offices. For example, rural development, food and civil supplies, road development, and the maintenance of crime-free subdivision of his area. The second issue that comes before him will be in case of any disaster like flood, fire, or anything like that, he has to lead from the front, take the help of all the possible agencies working in that area or the nearby districts, or even he can call through the district magistrate in extreme situations, request for the intervention of the Indian Armed Forces for rescue and search operations or anything like that. So a subdivisional magistrate is basically the face of government in that area. His area is he's a generalist bureaucrat, and he controls the coordinating power of all the agencies working in that area and maintaining of law and order and food civil supplies of the subdivision. The next is Bihar Police Service, in which you are posted as a Deputy Superintendent of Police in the subdivision as Subdivisional Police Officer. And the job is basically supervision of the law and order machinery apart from crime control, which is through local police stations, gathering of intelligence, and reporting to the district judges arena through Superintendent of Police regarding investigation of crime cases, and to take part with Superintendent of Police in the review of law and order and crime meetings headed by the district judge of that area, of the district. So apart from this, the other services have their specific requirements, and whenever there is any need to get any clarification on this, you can put those questions on the interface that you are being provided here, so that you will be getting clarification on any queries regarding that. So that will be all. Let's go. You can ask your questions through the interface and we'll get back to you. Thank you very much.